I already am very late for this video since a lot of students must have already been or are on the way of getting admitted to their respective colleges. But Namaste everyone, I'm Ishita and I'm back to this channel after quite a long time. I was really caught up in my life, but the main reason revolves around the fact कि मैं बिल्कुल भी relevant source of information नहीं थी इस पूरे topic के लिए. I was in my learning phase. I still am learning. I'm nobody very experienced, but at least I have something to share that I have experienced in my college life. So this video would just comprise of a basic insight of journalism and mass communication, not being descriptive about every single thing that we'll be talking about here. Before getting started, let me give a quick introduction about myself. I am based out of Gorakhpur, Uttar Pradesh, and I did my graduation from IP University, Delhi, which is also called Guru Gobind Singh Indraprasth University, in journalism and mass communication. So throughout my college life, I have worked at 15 different places. I mean, I have interned at 15 different places, out of which 3 were quite renowned. I worked with the Indian Express, I worked with The Logical Indian and Feminism in India, and currently I'm placed at iDiva, which was formerly owned by Times Internet but now comes under Mensa. It was my ninth standard when I discovered I would like to pursue journalism and mass communication, and I realized until unless you don't touch a segment or say a sector of your life, you would never know what that sector or field would take you, how far you would go with that. Something similar happened with me. I was in my ninth standard and I took a microphone, I spoke, and everybody really liked it. And I thought, okay, I could make a good journalist. But, there's more about journalism. To make it even simpler, let's suppose or let's take engineering as a set. You have a lot of subsets. You have chemical engineering, you have mechanical engineering, you have computer science, electronics and communication, and likewise a lot more. Similarly, if you consider mass communication as a set, you have a lot of subsets, which we will be talking about maybe later. But for now, just understand that mass communication by the name itself tells communication with the masses. तो अगर आप एक कंटेंट भी लिख रहे हो और लोगों तक पहुंचा रहे हो तो वो भी मास कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट ही कर रहे हो लोगों से. अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो और वो लोगों तक पहुंचा रहे हो तब भी आप कम्युनिकेट ही कर रहे हो. एक बैनर बना रहे हो, एक ब्रोशर बना रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, फिर भी आप कम्युनिकेट ही कर रहे हो. तो ये एग्जाम्पल्स सिर्फ इसीलिए ताकि आप समझ पाओ कि मास कम्युनिकेशन सिर्फ जर्नलिज्म के थ्रू नहीं हो सकता. जर्नलिज्म इज़ वन ऑफ दोज सबसेट्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आर सेम टर्म्स. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो, आप कैमरा शाय नहीं हो, आप स्पीच दे सकते हो, आप एंकरिंग कर सकते हो, तभी आप मास कम्युनिकेशन परस्यू कर सकते हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. आई मीन द सेट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ कैटेगरीज इन अ लॉट ऑफ सबसेट्स कि यू वुड नॉट हैव टू केयर अबाउट, इवन थिंक ऑफ इट ट्वाइस. पहली बात तो मेजरली जो डिवीजन होता है मीडिया में वो 3 होता है. वन इज़ प्रिंट मीडिया, वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्ट, एंड द थर्ड वन इज़ डिजिटल. तो प्रिंट जो ट्रेडिशनल फॉर्म होता है विच इज़ न्यूज़ पेपर्स, यू कैन वर्क इन द एडिटोरियल डिपार्टमेंट्स ऑफ द प्रिंट मीडिया. आई मीन टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दीज आर ऑल बिग मीडिया ब्रांड्स जो होस्ट करते हैं प्रिंट मीडिया. सेकेंड कम्स इलेक्ट्रॉनिक विच इज़ टेलीविजन एंड रेडियो. अगैन सेइंग टेलीविजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप माइक्रोफोन पकड़कर एंकरिंग या अपना रिपोर्टिंग कर रहे हो. ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें होती है. फॉर एन एग्जाम्पल PCR विच इज़ प्रोडक्शन कंट्रोल रूम. ओके, द थर्ड वन इज़ डिजिटल मीडिया. अगर हम एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ इट्स प्रिंट वर्जन जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एंड ऑल्सो हैज़ अ डिजिटल वर्जन ऑफ इट जो वेबसाइट है. ओके, timesofIndia.com. तो दैट इज़ वॉट डिजिटल मीडिया इज़. बट बहुत सारी कंपनीज सिर्फ डिजिटली काम करती हैं. बहुत सारी होस्ट बोथ, आई मीन प्रिंट एंड digital, but a lot of companies also go on all the 3 categories. So all I want to say is you need not be very extrovert, and not at all extrovert also works. Okay, you just need to be confident about your work. If you are writing, write good. If you are like speaking, speak well. You just need to polish and brush up those skills of yours. One more suggestion: if you are starting up freshly, it's just a suggestion, okay? Focus on your subjects and focus on different categories of mass communication rather than sticking to one. पहले ही आके ये मत बोल देना कि I have thought of becoming an anchor, so I will just stick to it. If you're sticking to it, it's all good. It's not nothing wrong or not a sin, but you might develop
another interest while you are growing up. I mean, अगर आप थर्ड ईयर तक जाते हो ना, तो ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे अपना जो फील्ड है वो स्विच करने की सोच देते हैं, क्योंकि दे थिंक ओके आई एम मोर टैलेंटेड इन दिस दैन दैट. So yeah, this was all about now. Let's see what all we get in the next upcoming videos. Until then, take care.